Lipid disorders या dyslipidemia. So इसमें अलग अलग syndromes हैं. So we'll start with obesity and metabolic syndrome, which has dyslipidemias and dyslipidemias, fatty liver, atherosclerosis, coronary heart disease, myocardial infarction, and stroke. So in some cases के अंदर these are complications or probably comorbidities which are related to obesity or metabolic syndrome or which include dyslipidemia. Now इनके causes क्या होते हैं? Simple causes हैं. There will be nutritional imbalances, lifestyle habits, majorly sedentary lifestyle, genetic abnormalities, secondary causes as a consequence of other disease जैसे Cushing syndrome हो गया या कोई और problems हो गई, fatty liver हो गया उसके हिसाब से. Now disorders क्या हैं इसके? So of course there are two types of it: hyperlipoproteinemias or hypolipoproteinemias. So dyslipidemia, dyslipidemia जो है, that can be subdivided into two major categories, as I said before. Hyperlipoproteinemia या dyslipidemia जो है, that is basically hypercholesterolemia, hypertriglyceridemia and combined hyperlipoproteinemia, जिसमें कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स दोनों ही बढ़े हैं. और हाइपोलिपिडीमिया या हाइपोलाइपोप्रोटीनीमिया जिसमें दोनों ही कम आ रहे हैं. Now hyper के अंदर this is an abnormal condition with an increased abnormal levels of circulating lipoprotein in the blood. That means blood circulation में oil की मात्रा बढ़ गई, lipoproteins बढ़ गए, fatty tissue बढ़ गया और blood clot होना शुरू हो गया या मोटा हो गया blood, I would say. Now dyslipidemia is due to the defect of lipoprotein metabolism, as simple as that. That may include both excess or deficiency of lipoproteins. Associated mostly in increase in increase of one or more lipid forms in blood circulation. So एक lipid बड़ा हो या सारे बड़े हो, ये broadly एक ही category में आता है dyslipidemia. अब classification क्या है? Classification में primary hyperlipoproteinemia जो है, it is divided into two parts: monogenic defect and polygenic defect. Now monogenic defects के अंदर it's familial hypercholesterolemia, familial lipoprotein lipase deficiency and familial combined hyperlipidemia. So familial hypercholesterolemia में homozygous या heterozygous defect होता है जिसमें inactive LDL receptor जो है वो inactive होता है, यानी कि LDL को न्यूट्रलाइज करने वाला रिसेप्टर जो है वो इनएक्टिव होता है. फेमिलियल लाइपोप्रोटीन लाइपेज डेफिशिएंसी जिसमें एंजाइम डेफिशिएंसी हो, जिसमें इनएक्टिव लाइपोप्रोटीन लाइपेज होता है. तो जब एंजाइम डेफिशिएंट होगा तो उसको न्यूट्रलाइज या डिसॉल्व कर नहीं पाओगे, तो वो इकट्ठे हो जाएंगे. और फेमिलियल कंबाइंड हो जिसका डिफेक्ट अननोन है, अभी तक पता नहीं. पॉलीजेनिक या मल्टीफैक्टोरल यानी कि जिसमें एक से ज्यादा फैक्टर्स हों, उसमें एंड ये कॉमनली इनकाउंटर्ड होते हैं, जिसमें हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया होता है या हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया होता है. नाउ कॉजेस क्या है इसके? इट्स मेजरली बिकॉज ऑफ इम्पेयर्ड लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म. सो बायोसिंथेसिस जो कि इंक्रीज करेगा, ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांसपोर्ट जिसमें इम्प्रॉपर हो, और अपटेक एंड यूटिलाइजेशन जिसमें डिक्रीज हो, यानी कि सिंथेसिस ज्यादा हो गया, ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, या फिर अपटेक या यूटिलाइजेशन मसल से या बाकी के बॉडी पार्ट से, मेजरली मसल से हुआ नहीं. अब इसकी कॉजेस क्या हैं? सो ऑफ कोर्स इट इज इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन, रिड्यूस क्लियरेंस ऑफ लाइपोप्रोटीन फ्रॉम सर्कुलेशन, and that may also be caused by excessive dietary intake of carbs and lipids, biochemical defect in lipoprotein metabolism जो मैंने पहले बताए, deficient protein to form apolipoproteins, defect in enzymes and proteins associated with LP, defect in receptors of our LP, and use of drugs that perturb LP formation or catabolism. Now ये hereditary causes होते हैं for hyperlipidemia. So of course familial hypercholesterolemia में permanent genetic disorder होता है that occurs in heterozygous form. It occurs in 1 in 500 individuals. Mutation in LDL receptor and resulting in elevated levels of LDL at birth and throughout life. These patients are of course high risk for atherosclerosis, tendon xanthomas, tuberous xanthomas, and xanthelasmas of eyes. And familial combined hyperlipidemia में autosomal dominant होता है और increased secretions और VLDLs होते हैं. LDL नहीं जाता, TG नहीं जाता, VLDL बढ़ जाता है. This beta lipoproteinemia में it affects in 1 in 10,000 individuals. It results in ApoE2, a binding defect form of ApoE, which usually plays an important role in catabolism of chylomicron and VLDL. It causes increased risk for atherosclerosis, peripheral vascular disease, and tuberous xanthomas and stria palmaris are common. Stria palmaris is basically दाने जो बॉडी में होने शुरू हो जाते हैं इन लाइंस. मैं आगे पिक्चर दिखा दूंगा. Now of course genetic causes, as I mentioned before, so familial जो है that's very less. Etiology है LDL receptor काम नहीं करता. Familial defect in ApoB,
So one more very important thing, जब भी आप लिपिड्स कराते हैं, सबसे important लिपिड फैक्टर इन सारे लिपिड्स के अंदर जनरलाइज टेस्ट नहीं कराते हम, जनरलाइज टेस्ट कराते हैं हम सब लोग, बट एपोलाइपोप्रोटीन बी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज वो जेनेटिक फैक्टर भी दिखाता है. सो अगर वो रिड्यूस होता है तो एलडीएल बहुत ज्यादा होता है, और अगर एलडीएल बहुत ज्यादा और अगर वो रिड्यूस होगा तो वो फेमिलियल डिफेक्ट जो है वो दिखाता है, जिसका ट्रीटमेंट इज वेरी डिफिकल्ट. देन इट्स पॉलीजेनिक हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया, जिसमें कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है, उसकी कॉज पता नहीं है. फेमिलियर हाइपर ट्राइग्लिसरीमिया, जिसमें ट्राइग्लिसराइड्स बड़े होंगे, वीएलडीएल बड़ा होगा, एचडीएल कम होगा. etiology ये है कि फेमिलियर ब्रेकडाउन कम हो जाएगा और वीएलडीएल सिंथेसिस बढ़ जाएगा. सिंथेसिस बढ़ेगा, ब्रेकडाउन कम हो जाएगा, तो इसलिए वो इकट्ठा होता जाएगा. मिक्स्ड हाइपरलिपिडेमिया है, जिसके अंदर अगेन ट्राइग्लिसराइड सारे के सारे बड़े होते हैं सिवाय एचडीएल के, वो कम होगा. इट्स अगेन डोमिनेंट, इट्स अ डोमिनेंट इनहेरिट जीन. And disorders in HDL metabolism, polygenic low HDL and familiar hypo alpha lipoproteinemia, जिसमें HDL कम होते हैं. देन जो पॉलीजेनिक है दैट इज मच मोर कॉमन बिकॉज वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड भी है, एंड ओबेसिटी, डायबिटीज, हाई कार्ब डाइट जो है आपको मिलते हैं, वो उसका कॉजेज है. अगेन दिस इज द सेम स्लाइड जो वहां से ले रहे थे. सो फेमिलियल कंबाइंड हाइपरलिपिडेमिया में देयर इज इंक्रीज्ड ट्राइग्लिसराइड्स, एलडीएल and or triglycerides and decreased HDL. Most common genetic dyslipidemia prevalence is 1:50. Heterogeneous inheritance and again accounts for 10 to 20% of patients with premature CAD. I had a patient, approximately is about 45, and triglycerides, so his LDL and cholesterol are generally increased, right? And triglycerides are generally increased. Whatever was done, and he's very lean and thin. These patients are not obese at all. Point was that it was not diagnosed until the history was taken perfectly. He has a family history of hyperlipidemia, right? So वो किसी को पता नहीं था. He used to take medication. Again, lost a lot of weight, but then it didn't help him. Triglycerides was still above 300. LDL was still above 150, 180 to 200. The reason was this. It's from a familial combined hyperlipidemia. It's very uncommon. It's only 10 to 20% of patients, but they are at a very high risk of premature CADs. So that's why it is important. HDL कम होगा तो of course आपको protective effect कम मिलेगा. Simple words. So of course most often so this is defect in metabolism, जिसमें low HDL is secondary to other dyslipidemia. बाकी lipid disorder हुए, HDL कम हो गया. Not at all associated with increased CAD risk, and not all associated with increased CAD risk. And Tanger's disease होती है जिसके अंदर HDL कम होता जाता है, and then of course CETP defect, which is results in increased HDL.